Hello children and dear parents. I greet you on the occasion of 74th Independence Day. On this day, we remember the great sacrifices made by our freedom fighters, starting right from Lakshmi Bai to Gandhiji, then Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Batukeshwar Dutt, Lala Lajpat Rai, so many of them. It's impossible to name so many of them. Endless name we have. The people who laid down their lives, they went to the gallows without a second thought. In fact, they had in their hearts the highest level of national spirits, like we say, Janani Janma Bhumicha Swargadapi Garyasi. We pay our rich tributes to our soldiers who are fighting on the border with all these enemies that we have, the Chinese, the Pakistanis, and so many unseen enemies within who are constantly threatening the existence of our nation. Remember, children, nation first. When the nation is safe and secure, we are also safe and secure. Prosperity of the nation will come only when the nation is safe and secure. Now the government has taken this step of Atmanirbhar Bharat, which is a very good step. So I invite you to develop your talent and contribute maximum to the nation building. Stay safe at home. COVID-19 is threatening the entire world. So let's fight COVID-19. I pray to God give us strength to overcome all the odds that the nation is facing. Now remember that nation is always first, and we are proud of this greatest nation on earth. So I'll end my speech. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Hello everyone. On behalf of the management of Woodridge International School, I would like to wish you all a very happy Independence Day. We have always dreamt of India to be self-sufficient, self-reliant, and most importantly self-supporting. And we are very glad to find that we are approaching towards our dream. Let us all strive hard to make India a self-sufficient nation. Jai Hind, Jai Bharat. Everyone, on this occasion of Independence Day, I like wish you all happy Independence Day. समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जुबान से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अरे अनाड़ी है थोड़ खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Hello all. On the auspicious occasion of 74th Independence Day, whole country is celebrating this day with joy and enthusiasm. Here are the students of class 3 of Woodridge International School wishes you all a happy Independence Day.
and here we present a short song together, followed by a short speech. So here we start. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा जय हिंद थैंक यू निकल गए हम न पड़े मिट्टी में मिर्जावा देने किल जावा इतनी सी दिल की राजो मिट्टियों में के जावा मिट्टियों में ले जावा इतनी सी दिल की राजो वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन थैंक यू गुड इवनिंग हेलो माय नेम इज कोरा टुडे आई एम गोइंग टू से a few lines on Independence Day. We celebrate Independence Day on 15 August of every year. Independence Day in India is a national holiday. It reminds the national struggle for freedom. It reminds us of the sacrifices of the freedom fighters. Thank you.
friends, today Nilanjan Roy is going to give a speech on behalf of Independence Day. We celebrate Independence Day as the national festival of India. The day marks the anniversary of national independence from the British Empire in 15 August 1947. Furthermore, it is the most auspicious day for the people of India because India becomes independent after a lot of hardships and sacrifices of the brave Indian freedom fighters. From that day onwards, 15 August became a very important day in the Indian history and in the hearts of every Indian. Also, the entire nation celebrates this day with full spirit of patriotism. After the independence, Pandit Jawaharlal Nehru was chosen as the first Prime Minister of India. Moreover, he unfurled our tricolor flag at the Red Fort in National Capital, New Delhi for the first time. From there onwards, every year we celebrate Independence Day at Red Fort, New Delhi. In addition, the army performs many tasks that also include a march past, culture programs by school students. In addition, we celebrate Independence Day to remember the lives that we sacrificed to gain this freedom, as they are ones who struggle for our country. Furthermore, on this day, we forget our differences and unite as one true nation should. Thank you. नमस्ते, मैं वुडब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के 7वीं कक्षा का छात्र मेधांश चंद्र आज आपके सामने 74वीं स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू से बताए गए कुछ शब्द दोहरा रहा हूँ। भारत को आज़ाद कराने की इस लड़ाई में शामिल होना सम्मान की बात है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करना दोहरे गर्व की बात है। अपने प्यारे देश के लिए तकलीफ उठाने से अच्छा क्या होगा। हम भारतीय के लिए इससे ज़्यादा भाग्य की बात और क्या हो सकता है कि यह तो अपने देश के लिए संघर्ष करते हुए मर जाए या फिर हमारी ये सपना पूरा हो जाए। आज़ादी, गुलामी और सच झूठ के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है। हमें ये मालूम चल चुका है कि खून बहाकर और तकलीफ सहकर ही आज़ादी हासिल होगी। देश की आज़ादी में इस महान संघर्ष में सेवा करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के लोग बिना थके ये संघर्ष जारी रखेंगे तब तक जब तक कि हमें कामयाबी नहीं मिल जाती, जब तक कि हमें अपने सपनों का भारत नहीं मिल जाता। आज़ाद भारत जिंदाबाद। मैं इस आज़ाद भारत की नागरिक होने से गर्व महसूस करता हूँ। धन्यवाद। I am Riya Das from class 8 from Woodbridge International School. I wish you a very happy Independence Day. In class 8 from Woodbridge International School, here to represent the dance on Independence Day, and I wish you all a happy Independence ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए
सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Hello everyone, wish you a very happy Independence Day. On the midnight of 15 August 1947, India became independent nation. This year, India will celebrate its 74th Independence Day. It is an annual celebration of the day India gained freedom from foreign rule. It was a historic day for our nation. For after years of struggling against the British rule, India was officially free. India's freedom struggle has inspired the world, for it was the most non-violent campaigns in the world. There were many known and unknown men and women laid their lives for freedom movement. One cannot emphasize whom we celebrate Independence Day. They made people aware of their rights and their power. India has seen as a lot of freedom fighters fight their motherland. Chandrasekhar Azad is one of those freedom fighters who sacrificed his life for our freedom. Fighters who sacrificed his life for our national freedom. Chandrasekhar Azad is referred to by his popular self-taken name Azad. He played the active and leading hand in reorganization of Hindustan Republic organization. He worked actively for arrangement of HRA group for a consensual working. Azad breathed his last in 1931 in Allahabad. He is always remembered as a courageous gem of vital hand in providing freedom for India. Thank you. My name is Shaptarshina. I study in class 10 and I am from Woodridge International School. Today is an auspicious day known as 15th August, and today I am going to be playing Vande Mataram on my keyboard and be playing tributes to all the freedom fighters who fought for the freedom. Thank you. Good morning everyone. Today I, Pushpanjali Gupta from class 12 Science, is here to represent a speech on Independence Day. Happy Independence Day to each of you present here. I am thankful for having India as my birthplace. I am here to speak about the importance of this very day. Like every Indian knows, we got independence in 1947 on 15th August, but not many knows its importance. So I would like to throw some light on the issue that is important to be addressed in the beaming light of our independence under the roof of our Tiranga. The British Raj had made the lives of natives of the subcontinent dreadful. A peasant was the backbone of the economy, as the state was encompassed with agricultural activities. Many more graver issues like this rose a feeling of nationalism. The independence that we are taking for granted never came to us served in a plate. As time passed, the nationalist feeling amongst us also strengthened. The economic drain due to commercial plantation and replacement of Indian handicrafts
with machines resulted in a nation that was finally awakening. We swiftly moved towards something great when India finally was breaking with British Raj by Heri, Satyagraha, Swadeshi boycotts and many more such. Indian Congress unfurled the Tiranga on 26th of January 1930 when India celebrated its first independence called Purn Swaraj. In 1947, India reached a final negotiation and the transfer of authority was finally shifting from the crown to the Indian subcontinent. India has seen the worst. Now it is our duty to make our motherland proud. This can be achieved only if we are honest towards our duties and respect everyone. Let us absorb what our great freedom fighters said. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living? Said by Mahatma Gandhi ji. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, said by बाल गंगाधर तिलक. दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहें और आज़ाद ही रहेंगे, said by Chandrasekhar Azad. Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are awaiting to say that your first victory was just luck, said by APJ Abdul Kalam. Wishing you all a great day ahead. Thank you. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. शुभ प्रभात। देश के 74 स्वतंत्र दिवस के मौके पर मैं प्रिया गुप्ता कक्षा 12वीं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज तिरंगा लहराता है पूरी अपनी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापार करने आए थे और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो यह संदेश देता है। पहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसका उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में के लिए इसका विशेष है। लगी गूंजे दसों दिशाएं वीरों के यशगान में, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार, जिसके आंचल की छाया में छोटा से ये संसार है। हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं हमारे हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। वतन